So, so I have not recorded a video in like 2-3 days, I think. And while I've put out videos because there were some pre-recorded ones and also voice ones where I put in different footage on the video, I just kind of was feeling so low that I didn't have the energy to actually face. I didn't have much thoughts in my head to give. There were a few stories that I've uploaded, like the spiritual story, and then the story about discipline, because that was one thing I was struggling. There is a lot less thought in my head, and which is true even today. But I feel a little better than the other days. So I thought, initially I thought I'm doing a little bit of these things. Like I've been avoiding to even eat good so far. So moisturizing and everything to bother ki baat hai. So I thought, okay, let me do this, a little bit of my beauty tea, so to speak. And then if I feel a little better, I'll feel a little more hydrated, and then I feel better. And then I should, but then I was like, I don't have the energy to do it. I don't have the energy to do both. So instead of putting out like a subpar video after I do this and no energy, I thought, let me try this and do this. A lot of people with art-based stories when they're doing makeup. And while I'm not doing any kind of makeup, I still wanted to kind of put out a story today. So this is here it goes. I guess it's not the entire story, just like a thought I have about few things. I think while there could be like there are nuances to my low days. I feel low days in pockets. And again, probably this is not a unique problem. Probably not. This is not a unique problem. There are a lot of women out there who feel this. But unfortunately, I grew up in a situation overall where I didn't see this to be normal, to feel low and be okay with it, to feel low and rest. I still feel guilty about the days I rest. Like even on the days I take a day off, I still not feel okay. I feel this urge, need to kind of be there, do the work and everything. And if it came from a place of, ki hum jo karne ka man hai, then it's okay. But a lot of it comes from a place of guilt, which I am still kind of I'm in the phase of accepting and embracing it, and probably then I'll kind of make changes to it. Or I think by maybe I am. Like I said, my thoughts will be a little scattered today. The thing is, I think in Indian context especially, हम लोग सबको kind of हमने ना भी सिखाया गया है, ना ही हमने अपने parents को देखा, especially our mothers, जहाँ पे they have been just being so at it, कि कुछ भी normal नहीं लगता है. मतलब rest करना तो बिल्कुल normal नहीं लगता है. And then a lot of it is also kind of put on us. मेरी माँ, जिस दिन she's not having a good day, she'll be angry, and that anger will translate to us. We feel bad, and then जो भी है. I remember सुबह में लेट तक सोना भी kind of, she used to get angry कि हम सुबह से जगे हुए, तुम क्यों just सोए हुए हो, right? And now it has become internalized for all of us कि खुद भी नहीं कर सकते. अब तो बहुत लोग जिनके बच्चे हो गए, because मेरे एज में सबके तो नहीं, बट बहुत के बच्चे ऑलरेडी होंगे, वो अपने बच्चों को भी कर रहे होंगे, बिकॉज हमें कभी समय ही नहीं मिला इस चीज़ को काइंड ऑफ समझने का. Somehow I think the system is built in such a way that women or even men, for that matter, are not given chance to even, like, by the time you realize क्या हो रहा है, जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती हो, इतने सारे responsibility हो जाते हैं, you just don't have the energy in you. I believe 20 should be the time to explore. And look, I'm not saying कि एक तरीके का life दिखना चाहिए. Someone could be very, very excited to be a mother at 21, 22. Like, look at Sushmita Sen, for example. She's not married, but she has children, and she's fucking happy. That's her main enough. I think she knew that. And that is commendable to know that at that age, and to kind of also be able to follow through that, right? And that's what I'm saying. She, for whatever reason, she got the chance. तो उसको शुरू से करनी था. जिसको नहीं है, उसको तो टाइम चाहिए ना यार. मेरे को तो बिल्कुल नहीं था. अभी भी I have a sense of किस डायरेक्शन में जाना है, but actually क्या करना है, तो मुझे अभी भी पूरा नहीं पता. And actually as in कि कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, they expect no. An acceptable answer is not कि अच्छा मुझे ये फील्ड पसंद है, let me explore it. Acceptable answer is कि ये है मेरा डेजिग्नेशन, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, and ऐसा. Which I can't fault parents for, because they are like, ठीक है, हम चाहते हैं कि settle हो. That's what they know of and everything. But man,
it's a lot of pressure on everyone, right? कि ऐसा करना है, and then you kind of end up believing कि लाइफ ही ऐसी होनी चाहिए, और इस भगदड़ में ऐसे फंस जाते हो कि किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता, स्पेशली अपने इमोशंस को समझने का टाइम नहीं मिलता, विच इज़ सो सैड नो, बिकॉज इमोशन बाकी सब चीज़ हो ना हो, कोई अपने साथ रहे ना रहे, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा थॉट्स तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं ना. एंड हमें ऐसा सिखाया गया है टू काइंड ऑफ रन अवे फ्रॉम देम. दैट्स व्हाट आई वाज टॉट. एंड अगेन, disclaimer, this is my experience, so I'm speaking only strictly about that. My, and sometimes maybe आसपास वालों का, but you might have a different experience, or you might have a different take, and that would be lovely to know. But so far, most of the people around me have had this experience कि समय ही नहीं मिला अपने इमोशन के साथ, अब स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग सब, एंड समझ में ही नहीं आता कैसे करें. एंड मोर देन एनीथिंग इज, हमें सिखाया गया कि बुरे इमोशन होते हैं, अच्छे इमोशन होते हैं. नहीं होते. इमोशन होते हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी, दे आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, एंड जितना सप्रेस करोगे ना उतना तुम्हारे पीछे भागने होगे. एंड देयर इज फिजिकल मैनिफेस्टेशन. व्हाट डू यू थिंक एंजाइटी इज? इट्स अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यू सप्रेसिंग योर इमोशंस, द गुड, द बैड, द अगली, फॉर अ लॉन्ग टाइम. And again, I would not want to call it good, bad, ugly, but that's how everybody understands. As the language of today, I don't believe emotions are bad. I believe they are there to tell you something. So अगर गुस्सा आ रहा है तो सोचने की बात है, क्यों आ रहा है, किस चीज़ पे आ रहा है, तो ताकि तुम उस पर काम कर सको, ना कि सोचो कि गुस्सा यार इसको हटाओ, जैसे मेरी माँ करती थी. उस चक्कर में मैं भी बहुत सालों तक ऐसी करती थी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आई नॉट एक्सेप्ट कि गुस्सा आ रहा है, मैं चुप हो जाऊँगी और साइलेंटली जिस पे गुस्सा आ रहा है उसको भी पनिश करूँगी, खुद को भी पनिश करूँगी, और आसपास वालों को भी पनिश करूँगी कि तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा मूड खराब है, तुम समझो. लाइक एज इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है यार, तुम्हारा बॉडी तुमको बता रहा है. एंड इट टुक मी सच अ लॉन्ग टाइम टू लर्न इट, विच जिसका आई बिलीव द मैनिफेस्टेशन टुडे इज आफ्टर सप्रेसिंग माई इमोशन फॉर सो लॉन्ग, आफ्टर people pleasing, where I put other people का need and emotion at the forefront for so long, that now मेरे को परचेज हो रहे हैं जहाँ पे आई विल हैव अ पीरियड ऑफ extreme high emotion, because now I'm not stopping my emotions. I'm let go already. I am like कि जो आ रहा आने दो, right? मेरा खुल गया है दरवाज़ा. तो अब जब इतने सालों से जब बंद पड़ा होता है कोई डैम, जब बिल्ड होता है, तो जब खोलोगे तो बहुत अचानक से बाहर निकल के आएगा. एंड देन उसके साथ नॉट जस्ट तुम्हारा अच्छे इमोशन सो टू स्पीक आएंगे, तुम्हारा थकान भी है यार, क्योंकि इतने साल का थकान है, धीरे धीरे करके निकलता है. तुम अपनी इस स्पेस में वेर यू आर kind of purging your other emotions, तो ये भी निकलेगा. So I believe this is what is happening, and there isn't much I can do about it. Also, I have kind of accepted that I can only perhaps manage it, regulate it as much as I can. So at the moment, I'm only letting it pass, क्योंकि अभी भी मैं fully sure नहीं हूँ कौन सा क्या emotion है. So I want to feel it to the fullest. I have been so scared all my life to feel any emotion, honestly. तो मैं कुछ भी फील करती ही नहीं थी यार, मैं पानी के अंदर रहती थी. ऐसा लगता है, यू नो हाउ यू फील इफ़ यू गो इन द वाटर फॉर सम टाइम, सब कुछ थोड़ा सा म्यूटेड आउट हो जाता है, कैसे सब एकदम धुंधला सा साउंड करता है, दिखता है. मुझे वैसा ही आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माई लाइफ लाइक दैट. मेरा फेल्ट वेरी वेरी he's suppressed, muffled actually, that's the word I'm looking for. And then, you know, एक पॉइंट के बाद जब मैंने somehow पता नहीं क्या आया दिमाग में, मैंने सोच के भी जंप नहीं किया. आई वाज जस्ट सो, आई थिंक डेस्परेट टाइम था, मैं बहुत लो लेवल पे थी. एंड ये बार साइकिल आया है बिकॉज मैंने प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया है, धीरे धीरे करके किया है. पर जो भी है, जब कर रहा वाला मेरा लो आया था, तब आई रिमेंबर जस्ट काइंड ऑफ बीइंग एज वेल जम्प. आई वाज लाइक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सामने वाला पर्सन को देख के जरा इसमें थोड़ा आइडिया, लेट्स काइंड ऑफ गो विद दिस पर्सन एंड बी लाइक कि ठीक है तुम्हें बताओ क्या करना है. एंड आई डिड. एंड उस वक्त the only thing that made me feel alive was just the fear, and I experienced so much of fear in that phase. And I think that was probably one of the first emotions that I felt to its fullest. तो मुझे ना fear की और दर्द की आदत हो गई थी, and मुझे सिर्फ वही इमोशंस अच्छे से भी होते थे. खुशी तो होती थी, बट मुझे उस वक्त समझ में भी नहीं आता था खुशी किस चीज़ से मिल रही है. तो काइंड ऑफ ऐसा fear और इसको, और धीरे धीरे ना इट बिकेम लाइक अ चैलेंज, अ गेम फॉर मी, कि ये फियर है, मुझे डर है कि मैं लोगों से जाके कैसे बात करूँ. तो आई यूज्ड टू गो, स्टार्टेड लाइक नोएडा की बात है, नोएडा सेक्टर 15 के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे अपना डांस स्टूडियो हुआ करता था. तो वहाँ जाती थी, वहाँ पे मतलब रास्ता क्रॉस करके उल्टे साइड में रेसिडेंशियल एरिया, तो जाती थी पर्ची लेके. एंड इंडिया में लड़कियाँ पर्चियाँ थोड़ा कम बांटती भी हैं, तो इस तरह से स्पेशली नोएडा एरिया में जाके नहीं बांटेंगे, बिकॉज बहुत अनलाइकली है तुम देखोगे.
मैं जाती थी ना कि जस्ट पर्ची पाती थी, लोगों से बात भी करती थी. And this was at a time when I was shit scared of talking to people, but I did. And not just that, I actually made scenes. I made people to come to the studio, and I converted those people to pay. There was a full class going on weekly basis पे, मतलब twice a week basis पे होते रहता था. And all those people, I converted them to sing. And it was such a moment of pride. But इस तरीके से मैंने शुरू किया था अपना जो भी जर्नी. एंड ऐसे करके धीरे करके पता नहीं मेरे में क्या था. आई थिंक मेरा थोड़ा सा समटाइम्स ना मैं ज़्यादा कैलकुलेट करती नहीं हूँ. मैं थोड़ी सी आई डोंट नो मे बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड हूँ, या मेरे में जजमेंट किसी चीज़ में थोड़ा कम है. लाइक टू ट्राई स्टफ, मे बी इट वाज दैट. सो आई काइंड ऑफ गॉट इनटू इट. ओके, जबकि आसपास वाले सब यार सब बोल रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, लड़की को तुम बेच रहे हो, भाग दौड़ कर रही है. इट्स नॉट अ नॉर्म, स्पेशली नॉट इन आवर क्लास हिंदू कास्ट, यू नो दैट. सो समहाउ दैट हैपेंड इन दैट काइंड ऑफ. तो इसी तरह से रैंडम चीज़ें जो कि नॉन नहीं थी, मेरे आसपास के लोग कर नहीं रहे थे, मैं कर करा के ना इस तरीके से निकल रही थी अपने डर से. धीरे करके ऐसी चीज़ें करी थी जो मुझे लगा था मेरा है, मेरा अचीवमेंट है, मेरा फेलियर है, मेरा सक्सेस है. बिकॉज जिस टाइम तक मैं सब वही कर रही थी जो दूसरे के है. तो समहाउ धीरे करके खुलने लग. एंड खुलते फिर जब खुलने लगता है दिमाग, तो तुम सवाल खड़ा करते हो कि इतना टाइम से बंद था क्यों. तुम अपने आसपास देखते हो कौन है, कैसे हैं, क्यों है, right? And really, I think that's what I started questioning people around. And of course, a lot of them didn't like it, especially my parents, because they expected absolute obedience from me, which I was obviously not giving them. So, given that शादी की उम्र हो गई, but लड़की हाथ से निकल गई है, बात नहीं सुन रही है, especially given that my mom wanted to control, मेरी माँ को control करना पसंद है, उसको वही चाहिए. That's what she wants. Anyway, that's what I did. For a long time I actually listened to her, but then जब थोड़ा सा ये करना शुरू किया ना, तो तब जैसे ही मैंने the moment I started to stand up for myself, मेरे अंदर का emotion निकलने लगा. And right now the biggest emotion I have is गुस्सा. Somehow I also have a little bit of empathy for all these people, the people who are my abusers, who I look at them कि मेरे को manipulate कर रहे थे, control कर रहे. But somehow मेरे को उनके लिए empathy भी है. I don't have to forgive them and accept them for me to be empathetic towards them. So I understand where they're coming from. They're product of their own issues and projections or whatever. But at the same time, there's just so much of anger in me. And this anger is not me as an adult. This anger is the child inside of me, who craved acceptance and love and affection, which you only got on conditional terms. So a lot of internalized shit there. Let's not make this as a therapy session. What I was trying to say that after so many years, I finally accepted कि okay, anger is okay. And उसी गुस्से का उस तरीके से इतना सारा इमोशन इस तरीके से निकलने का और नतीजा मेरे हिसाब से ये लो टाइम होता है. मेरा लो टाइम काफ़ी लो ही होता है, जैसे सबका हो. कभी बिस्तर से उठ के पानी पीने का मन नहीं करता. It's तो thankfully I don't live alone, so the other person is able to take care of me in these days where I'm like कि मेरे से नहीं हुआ कर दो यार. So they're able to do that. But it used to initially when this journey started, when I started seeing these low conditions, I used to be like fuck मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है. I only used to sit at one place through the entire day and do nothing. And धीरे I started accepting that as well कि ठीक है लो पीरियड है, कुछ कर नहीं सकते. And then this time around, I'm actually especially proud of myself. Like, in my low time, I was able to prioritize as well. Like, this time around, I was conscious enough. I have been through the cycle enough time and been extremely aware of it that I was able to concentrate, actually prioritize. क्योंकि ये 4 चीज़ें जो मुझे करना ज़रूरी है. तो even if मेरे पास energy limited है, let me focus this on that and बाकी सब चीज़ को ignore करते हैं. And that's how I've been keeping the first, right? Like, even the YouTube channel, it can't be run. I can't make content just basis on motivation. I have to do it consistently with a lot of discipline. And discipline is not easy, but it's also necessary. And the day you realize that you're able to do it, the point of this video was basically to say, yeah, that's okay. It's okay to feel angry, feel sad, feel just not up for anything. And that doesn't make you any less of a person. I still struggle with that, by the way. I still am. It still makes me feel like a less of a person for me to not be able to go through this with much more grace. But that voice somehow is more like
a third voice, like मेरा आवाज़ नहीं है, मेरे अंदर की आवाज़ है जो कि बहुत ही तकलीफ वाला, like I can empathize with that voice. That voice has never been allowed to just be. So now it's coming out to be this bitter, judgmental person. And I can't suppress her. I don't want to suppress her. I want her to be. उसको लग रहा है तो उसको लगने दो. Let her be. And just what I've been talking about. अगर purge करने की ज़रूरत है तो purge होने दो. This is how it will happen. This is what I believe in happen. This is just a progress. And I know it in my heart that ये आगे चल के ऐसे ही होगा, क्योंकि इतने साल से जब सप्रेस करोगे तो यार निकलने में भी उसको समय लगेगा. And it's okay. It's a process. I tell myself, and I also believe that there are moments where it's very difficult to believe that. There are moments where it feels like it's zindagi bhar ka hi hoga. But even in those moments, I feel like it's all worth it. It's all worth it for me to give that kind of room to myself, which I was not provided for all these years. It's perfectly okay. I feel like I'm talking to myself, telling myself that it's okay. And it is. I mean, yeah, I wish it wasn't there. I wish बचपन में ये सिखाया नहीं गया होता तो हमें अभी अनलर्न करने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता होता. बचपन से नेचुरल हो जाता. बट कोई बात नहीं, उसका भी कोई रीज़न है. कोई रीज़न है जो बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ. कोई रीज़न है कि ये वीडियो आप देख रहे हो. सो I don't believe in coincidences. I believe the universe is a beautiful movie where we are all playing a role. Like Shakespeare said, it's all a stage. We're just playing our roles and we don't know how we fit into everything, but we do. Otherwise, we won't be here. So, yeah, which is why I have learned to listen to my voice. If my voice is telling me to do something, I do it. Because even if इस मोमेंट में मुझे उसका सेंस नहीं समझ रहा, मुझे कोई सेंस नहीं समझ रहा यूट्यूब वीडियो बताने का. मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या लेके जा रहे हो. राइट, बट बस ये आवाज़ मेरे को बोली तू बनाती रहे तो मैं बना रही हूँ. That's all that is kind of happening here. And I believe all things beautiful start with this, just action. इतने साल से मैं इतनी घबराती थी कोई एक्शन लेने की, फाइनली मैं एक्शन ले रही हूँ. तो बस मेरे को यही समझ में आता. That's all I know. You need to just do and be, and that's kind of all you can be. And that's what we are doing, and that's what I want you to do as well. आपके अंदर जो भी आवाज़ है, whatever it is, if you're resonating with what I'm saying, I would implore you to धीरे धीरे जैसे भी, whatever your pace looks like, you can go cold turkey और सीधे कूद जाओ या धीरे धीरे जाओ. I would prefer if you do cold turkey. It's much more fun that way. But even in that, like even cold turkey where there are, to maintain that, you still have to do a lot of things there. So it has to be a mix of both. And you need to do that and kind of just jump into it and go ahead. What will happen is, the more this practice I've seen, I've started living more in the present, because I'm not wondering about क्योंकि इसका क्या पॉइंट है, इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, कितने सब्सक्राइबर आएंगे, नहीं आएंगे, क्या पैसा मिलेगा. The more I worry about those things, the more anxious I actually become. So I take that as an indication कि मेरा वहाँ है सोचने का, देखने का. So then what needs to be done? Just make videos. That's all I do. All day, every day, that's all I'm doing here. And jump into that scene. I also am, by the way, to kind of, if you are wondering what is your obstacle and what is stopping you from yourself, it's gonna be you. But what does that look like? Who's that person who's stopping you to be your full goddess self, goddess self? तुम्हारे अंदर की शक्ति कौन रोक रहा है? To understand that, because we have been doing that work for some time now. So I don't know the dates yet, but I would be organizing some kind of camp, retreat. I don't know what to call it. So if you are interested in something like that, if you're intrigued about it, please reach out to me on YouTube or Instagram में DM कर ले यार, and we can talk about कि आपको क्या चाहिए उस retreat से, and then we can see if I can help you there. It would be like, this journey is not easy, and I would like, it helps to have someone. Community हो तो बहुत easy हो जाता. I have my people who keep me in check. We both keep each other in check कि हम लोग सही direction में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपने सही direction. So I want to build a community like that. अगर आपको भी interest है, if something of that sort is something interesting for you, I am rambling, but you just kind of reach out to me.
सब्सक्राइब, कीप अ लुक आउट, कम टू माई इंस्टाग्राम रील. कुछ सॉलिड निकलेगा कि हाँ इस तारीख से इस तारीख कर रहे हैं हम लोग कोई रील, तो मैं बताऊँ. आप आओ.